Good afternoon, everyone. Myself, CA Raj Chawla, organizer of this today webinar on GST penalties, scope, and gaps. And today we have with us very eminent speaker, CA Sarthak Garg ji. I welcome CA Sarthak Garg ji and CA Pranshu Goel ji. I welcome to CA Pranshu Goel ji. And today this webinar will be moderated by CA Vikash Sharma ji. I welcome CA Vikash Sharma ji also. And today our speaker will cover the basics of penalty, scope of penalty provisions under GST, absence of procedural framework in section 122, and overlap with section 73-74. Next is ambiguity in interpretation of tax evaded, and the last, emerging jurisprudence. And friends, I request all of you, if you have any query, please write down your query in our Q&A section. Our moderator will take up all of your query after the presentation of our honorable speakers. So with this, I request CA Sarthak Garg ji to please start his deliberation. Good evening, everyone. Thank you, Raj Chawla ji, learned Central Council member, and team NICI for organizing today's webinar. So it is always a privilege to be giving and sharing my views on this illustrious platform. पिछले 4-5 सालों से चावला जी रेगुलरली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वाले वेबिनार की सीरीज, और बड़ी एक ऑनर की बात है कि हम यहाँ पे आके अपने व्यूज शेयर करते हैं विद ऑल दी ऑडियंस. सो जो आज का टॉपिक है इज रिगार्डिंग द अंडरस्टैंडिंग द स्कोप, प्रोसीजरल गैप्स एंड इमर्जिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑन पेनल्टीज अंडर जीएसटी. सो एक ये वाला टॉपिक मेरा और प्रांशु जी का सेलेक्ट करने का रीजन ये था कि इस पे बड़ी ही हमें ऐसा लगता है कि लिटिगेशन होगी इनफैक्ट इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि जो सेक्शन 122 और बाकी की पेनल्टी प्रोविजंस हैं ये बड़े ही पोरली ड्राफ्टेड है इनफैक्ट, क्योंकि जीएसटी एक इवॉल्विंग लॉ है और धीरे धीरे क्या है हाई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आएंगी, फिर चेंजेस होंगे. जैसे ऑलरेडी इनकम टैक्स लॉ में हो चुका है, इनकम टैक्स लॉ 60 साल पुराना लॉ है, तो धीरे धीरे जो जो चेंजेस, जो भी ड्राफ्टिंग एरर्स थे वो धीरे धीरे अमेंडमेंट के थ्रू रेक्टिफाई करे गए हैं. सो इवन वी आर ऑफ द व्यू दैट अंडर जीएसटी एज वेल, जीएसटी अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, एंड विद इन सम टाइम पीरियड जो ये ड्राफ्टिंग एरर्स हैं दिस विल डेफिनेटली रेक्टिफाई. So GST was introduced approximately 8 years back, and now we have entered the 9th year of the GST regime. So GST is not only a compliance mechanism, it is an evolving ecosystem, which is shaping itself as per the Indian business system. Obviously, GST has matured itself over the past few years. Government is trying its best, to streamline the process and give more and more clarifications. So a lot of changes have been made in the recent past. The IST provisions was introduced from 1st April 2025. तो जो टैक्स पेयर्स मल्टीपल स्टेट्स में ऑपरेट कर रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी कर दिया गया था. और इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है जो एक इम्पॉर्टेंट चेंज आया था बेस्ड ऑन द मैचिंग कॉन्सेप्ट. और ई इनवॉइसिंग जो है 30 दिनों के अंदर अंदर करनी होगी फॉर ऑलमोस्ट ऑल द टैक्स पेयर्स. And changes in the GST return filing system, introduction of GSTR 1A, hard locking of 3B are some of the changes that have been recently introduced. Apart from that, there has been a lot of litigation already jo ho chuka hai. Transitional credit issue was a major part. Fake invoicing, ITC availed from cancelled dealers, or apart from that, non-payment of tax by the supplier, 2A 3B mismatches, e-waybill issues, valuation disputes, these all issues have taken place in the GST regime, जिस पे litigation काफी हुआ है. So another area of litigation that has been there is regarding the assessment versus arrest, that whether assessment is a prerequisite to arrest, or can the arrest be made without any determination of tax under GST. That is whether section 74 or 73 is a prerequisite before undertaking any arrest of an accused. So a lot of high courts have held that yes, assessment is necessary, but there have been divergent views on this issue as well. So
as I told you, Section 122 and the penalty provisions have been poorly drafted, in my view. And it is an untouched area and a contentious area, which will definitely see a lot of litigation in the near future. So, for instance, there is no specific timeline or procedure in the Section 122 that what is the timeline to issue a show cause notice, unlike 73 and 74. Who will adjudicate the show cause notices under GST? There is no clarity. And apart from that, whether Section 74 is a prerequisite of Section 122, that is for levy of penalty. So, these are some questions that are in my mind, and obviously, I want to discuss the same with you. So, our presentation would be based on this theme only. So, I will be discussing, basics about penalty, that penalty क्या है, कब लगती है, क्यों लगती है, and कब नहीं लगनी चाहिए, how courts have interpreted about the penalty provisions under tax laws. I will also be discussing section 73, 74 and 74A regarding the penalty for tax not paid, tax short paid or erroneous refund or ITC wrongly availed or utilized. So penalty 73, 74 या 74A में लगती कब कैसे और quantum क्या है penalty लगने का. So thereafter I will be discussing section 122 जो हमारा main section है आज के discussion का. That उसमें penalty कौन सी penalty है, कौन से offenses हैं और कितनी penalty लगनी चाहिए. Apart from that, section 125 that speaks about general penalty under the GST law. Section 126 which speaks about general disciplines related to penalty. Section 127 and section 128 which are general. And yes, I think it's important to discuss these provisions as well. Thereafter, Pranshu ji will be discussing very important questions, FAQs and an important recent case law of Patanjali Ayurved, जो कि सेक्शन 122 की पेनल्टी के ऊपर एप्लीकेबल है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. So firstly, as I said, I will be discussing about the basics of penalty. So penalty is basically a monetary punishment which is imposed for breach of law. So if a taxpayer is unable to perform a duty which is casted under the law, then a monetary punishment is levied for violating such law. So penalty is basically levied to ensure compliances, that all the taxpayers comply with the law. So penalty is always levied on the tax amount. It is percentage based, and in some cases it can be quantum based as well. So penalty is in addition to that tax and the interest component. So one of the important principles of levy of penalty is, that has been held by Honorable Supreme Court in number of cases, that before imposing penalty, a finding has to be rendered about presence of mens rea. So mens rea is an important essential character for imposition of penalty. And obviously कोई general procedural lapse के लिए mens rea होना जरूरी नहीं है, but yes, for tax evasion courts have felt that mens rea is important. So before issuing a show cause notice where the proper officer is levying penalty, he has to give a specific finding about the presence of mens rea. So apart from that, penalty is in violation of Article 19(1)(g). So Article 19(1)(g), provides an unreasonable restriction on the right to carry trade, business, and profession. So courts have also held that penalty, cannot be levied in each and every cases because it is in violation of the Article 19(1)(g). Apart from that, penalty is not automatic. A lot of courts have said, including in the excise regime and in the income tax regime as well, that penalty is not automatic and it is always discretionary upon the power of the officer. So apart from that, one important argument is that penalty is not applicable in case demand of tax itself not payable. So अगर tax की demand ही नहीं होगी, so why penalty should be levied? So this is one important aspect, that needs to be kept in mind while drafting a replies कि भाई penalty लगनी नहीं चाहिए क्योंकि मेरा demand of tax is itself not payable. So as far as GST Act is concerned, so there are identical provisions for penalty in the state and central act. दोनों के penalty provisions वो same है under the state act and the CGST act. और section 20 of the IGST act है, वो penalty की बात करता है. It links basically penalties जो हमारी linkage हो रही है CGST act से, और section 20 of the IGST act की वजह से link हो रही है in fact. Apart from that, as per section 6, proper officer under one act
D is deemed to be a proper officer under another respective act. And penalty quantified under CGST Act deemed to be automatically quantified under the SGST UTGST Act. So अगर पेनल्टी कोई भी प्रॉपर ऑफिसर एक एक्ट में लेवी करेगा तो वो दूसरे एक्ट में ऑटोमेटिकली लेवी हो जाएगी एज पर सेक्शन 6. So these are some important principles that one should kept in mind while contesting notices with respect to penalties. So section 73, lot of members must have deal with this section. Section 73 applies when tax is not paid, short paid, or refund is erroneously granted, or ITC is wrongly availed or utilized for cases other than fraud, willful misstatement, suppression of facts. So when there is no suppression of facts, fraud, then penalty under section 73 can be levied. So obviously उसमें tax की demand भी होगी एंड पेनल्टी और इंटरेस्ट भी लग के आएगा. सो पेनल्टी अंडर सेक्शन 73, जो हमारा सेक्शन 73 प्रोविजन है, दैट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द टाइमलाइन, कि टाइमलाइन कब होगा शो कॉज इशू करने का और ऑर्डर कब पास करना है, व्हाट इज द टाइम फ्रेम, टाइम लिमिट क्या है ऑर्डर पास करने की. अपार्ट फ्रॉम दैट पेनल्टी लगेगी कैसे, कब लगेगी, कब नहीं लगेगी, व्हाट विल बी द क्वांटम ऑफ लेवी ऑफ पेनल्टी. फॉर इंस्टेंस SCN must be issued at least 3 months before the 3-year time limit of passing an order. So, under section 73, a notice for a particular year can be issued within 3 years from the due date of annual return. And SCN must be issued at least 3 months before the 3-year time limit. So, there is a specific timeline for issuance of show cause notice and passing an order. Apart from that, as per subsection 5, if the taxpayer pays interest and tax voluntary before issuance of show cause notice, then no penalty shall be levied. So there is a waiver of penalty under section 73, that no penalty shall be levied if the tax and interest is paid voluntary before issuance of a show cause notice. Apart from that, if the taxpayer pays tax plus interest within 30 days of show cause notice, then also penalty shall not be levied and all proceedings shall be deemed to be concluded. So, under section 73, subsection 8, if the tax and interest is paid within 30 days, then no penalty shall be leviable, and there is a deeming conclusion that all proceedings shall be concluded. So section 73 provides a specific timeline procedure for issuing show cause notices and determining the penalty amount and when will the waiver of penalty be given to the taxpayer. So section 74 is applicable when there is short payment of tax not paid, refund erroneously granted, ITC wrongly availed or utilized due to fraud, suppression of facts with the intent to evade taxes. So section 74 में show cause कब आता है, जब कोई भी फ्रॉड का, विलफुल मिसस्टेटमेंट का या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स का केस हो विद द इंटेंट टू एवेड टैक्सेस. So there is also a specific timeline and procedure given under section 74. Yes, there is a waiver of penalty also if the tax and interest is paid before the issuance of a show cause notice, then a reduced penalty of 15% is to be paid under section 74. If the payment of tax and interest is paid within 30 days, then penalty up to 25% is to be paid under section 74. And there also proceedings shall be deemed to be concluded when tax, interest and 25% penalty is paid within 30 days of show cause notice. Apart from that, if the tax and interest is paid within 30 days of order, then penalty at 50% will be leviable and the proceedings shall be deemed to be concluded. Apart from that, under section 74, show cause notice is to be issued within 5 years from the due date of annual return, and the show cause must be issued at least 6 months before expiry of the time limit to issue order, that is before 5 years. So in 4.5 years, the show cause has to be issued for any particular year under section 74. So apart from that, there is an important explanation 2, which says that if SCN was issued to multiple parties and the main person's case is concluded, then proceedings against others, which is liable to penalty under section 122 or 125 are also deemed to be concluded. So इस explanation से ये लगता है कि अगर show cause issue हुआ है multiple parties को और अगर main person जो accused था उसकी proceedings conclude हो गई हैं,
तो बाकी जो अदर पार्टीज हैं उनकी प्रोसीडिंग्स भी कंक्लूड हो जाएंगी, विच वॉज इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 122 एंड 125। सो यहाँ पे एक डीमिंग फिक्शन दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू लेवी ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 एंड 125, दैट अगर सेक्शन 74 में प्रोसीडिंग कंक्लूड होती है मेन पार्टी की, तो ऑटोमेटिकली अदर पार्टी की भी प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो जाएंगी। So a newly incorporated section 74A was introduced, which is applicable from financial year 24-25. So 73 and 74 are applicable till financial year 23 and 24, and thereafter from 24-25, section 74A will be applicable. So the इसमें एक कंसोलिडेटेड टाइमलाइन दी गई है टू इशू अ शो कॉज नोटिस एंड टू पास एन ऑर्डर इन फैक्ट। सो वहां पर 73 74 में देयर वर डिफरेंट टाइमलाइंस टू पास एन ऑर्डर टू इशू अ शो कॉज नोटिस। 73 में डिफरेंट टाइमलाइन थी, 74 में डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइन थी। यहाँ पर एक ही टाइमलाइन है इनफैक्ट, वो है 42 मंथ्स की, कि एससीएन जो होना चाहिए वो 42 मंथ्स में इशू हो जाना चाहिए इनफैक्ट। The penalty amount is same. If you know the penalty under section non-fraud cases, if the tax and interest is paid before issuance of show cause notice, then penalty shall not be levied. अगर within 30 days करते हैं तब 73 में penalty नहीं थी, यहाँ पर वो time frame within 60 days हो गया है, that if you pay tax and interest within 60 days of show cause notice, then no penalty shall be levied and proceedings shall be deemed to be concluded. Similarly, under subsection 9 or section 74A, which deal with fraud cases, if the tax and interest is paid before issuance of show cause notice, then only 15% penalty shall be levied. And if the tax and interest is paid within 60 days of show cause notice, then 25% penalty shall be levied. And if the tax and interest is paid within 60 days of order, then 50% penalty shall be levied. So the quantum of levy of penalty is same. The only change is the number of days. 73 74 में 30 days था, यहाँ पे वो टाइमलाइन एक्सटेंड कर दी गई 60 days की। सो यू नो अंडर सेक्शन 73 74 एंड 74A, इन तीनों सेक्शन से ये चीज निकल के आती है दैट देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर फॉर इशूएंस ऑफ अ शो कॉज नोटिस। दैट शो कॉज इशू करेगा कौन? प्रॉपर ऑफिसर करेगा। कब करेगा? टाइमलाइन दी गई है। एंड ऑर्डर कब तक पास करना है उसकी टाइमलाइन दी गई है। There is a specific subsection which deals with waiver of penalty, that penalty कितनी waive होगी और कब कब waiver हो जाएगी in fact. Another important point that I want to highlight is section 75 subsection 13. So section 75 deals with general provisions relating to determination of tax. So subsection 13 ये बात करता है that where any penalty is imposed under section 73 or 74 or section 74A, then no penalty for the same act or same omission shall be imposed on the same person under any other provisions of this act. So section 75 बोलता है अगर पेनल्टी किसी भी पर्सन के ऊपर लग गई है 73 74 और 74A में, तो सेम एक्ट और ओमिशन के लिए पेनल्टी नहीं लगेगी अंडर एनी अदर प्रोविजन। सो मान लेते हैं एज पर दिस सेक्शन 73 या 74 में पेनल्टी लग गई है तो सेक्शन 122 की पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। सो दिस सबसेक्शन इज क्वाइट क्लियर, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, विच क्लियरली स्टेट्स की पेनल्टी किसी और सेक्शन में नहीं लगनी चाहिए इनफैक्ट, अगर एक में लग गई है तो। So now section 122 deals with the penalty for certain offenses. So section 122 के अंदर 21 ऑफेंस है जो लिस्ट करे गए हैं और जिसकी पेनल्टी बताई गई है। सो ये जो ऑफेंसेस हैं, these largely relates to procedural lapses, non-payment of taxes, registration defaults, fraud, suppression of facts. सो ये चारों चीजें के बारे में सेक्शन 122 डिस्कस के बारे में पेनल्टीज प्रिस्क्राइब करी गई हैं कि अगर इन के रिलेशन में कोई भी ऑफेंस होगा तो पेनल्टी लेवी होगी ऑन अ टैक्सेबल पर्सन, और कितनी लेवी होगी उसका अमाउंट भी क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। So section 122(1) states that where a taxable person who supplies any goods or services or both without issue of any invoice or issues an incorrect or false invoice with regard to such supply. So पहला एक ऑफेंस जो सेक्शन 122 में स्पेसिफाई किया गया है वो है कि कोई भी टैक्सेबल पर्सन जो है वो गुड्स सप्लाई करता है विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस। सो गुड्स तो सप्लाई कर दिए बट कोई इनवॉइस इशू नहीं करा। सो दिस इज अ सर्टेन स्पेसिफाइड ऑफेंस अंडर सेक्शन 122। इसकी पेनल्टी कितनी होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड ऑफेंस इज
a taxable person issue invoice without supply of goods. So basically कोई भी taxable person एक fake invoice issue करता है जिसमें there is no underlying supply of goods or services. So ये भी एक specified offense है जो section 122 में बताया गया है. Apart from that, एक offense ये है कि अगर कोई भी taxable person collect करता है कोई भी tax but fails to pay to the government beyond a period of 3 months from the date on which such payment becomes due. So ये भी एक specified offense है that अगर कोई भी taxable person tax collect कर लेता है but उसको payment नहीं कर पाता to the government within 3 months of such payment becoming due, then it is also a specified offense and liable to penalty under section 122. अपार्ट फ्रॉम दैट एक फोर्थ जो कॉन्ट्रवेंशन है वो ये है कि कोई भी टैक्सेबल पर्सन टैक्स कलेक्ट करता है इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट बट फेल्स टू पे द सेम टू द गवर्नमेंट बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स. मान लेते हैं टैक्स कलेक्ट करना ही नहीं था बट कलेक्ट कर लिया और नहीं पे कर पाया 3 महीने तक, तो भी उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी अंडर सेक्शन 122. Fifth offense is regarding the TDS. If a taxable person fails to deduct TDS as per section 51, subsection 1, or TDS is, deducted less than the amount which is required to be deducted. So in that case also एक specified offense है वाला और penalty shall be levied. So अगर TDS काटना था नहीं काटा या TDS कम काटा है जितने amount का काटना चाहिए था, then also penalty can be levied under section 122. अपार्ट फ्रॉम दैट सिक्स ऑफेंस जो है वो टीसीएस की बात करता है कि जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस का कलेक्ट करना था बट वो नहीं कर पाया या फिर कलेक्ट किया बट कम कलेक्ट किया जितने अमाउंट का करना चाहिए था. सो दैट इज ऑल्सो स्पेसिफाइड ऑफेंस अंडर सेक्शन 122. उसके अलावा सेवेंथ जो ऑफेंस है दैट स्टेट्स दैट व्हेन अ टैक्सेबल पर्सन takes or utilizes ITC without actual receipt of goods or services or both, either fully or partially, in contraventions of the provisions of the Act or the rules made thereunder. So seventh clause जो है वो ये बात करता है कि कोई भी taxable person ITC ले लेता है without receiving of goods or services. So fake invoice किसी ने issue करा और उसी fake invoice का ITC लिया किसी भी receiver ने, तो वो भी एक specified offense है under GST Act. Apart from that, fraudulently obtains refund of tax under this act. So अगर कोई भी tax payer और refund obtain करता है from fraudulent means, then also it is a specified offense and liable to penalty under section 122. उसके अलावा अगर कोई भी टैक्सेबल पर्सन आईटीसी लेता है डिस्ट्रीब्यूट करता है इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 20. सो सेक्शन 20 बात करता है आईएसडी के प्रोविजंस की दैट जो आईएसडी होगा वो आईटीसी लेके डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन टर्म्स ऑफ रूल 39. सो अगर किसी भी आईएसडी ने गलत आईटीसी ले लिया है, गलत आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपनी ब्रांचेस को, दैट इज ऑल्सो लायबल फॉर पेनल्टी अंडर सेक्शन 122. उसके अलावा एक क्लॉज है जो कहता है कि अ टैक्सेबल पर्सन falsifies or substitutes financial records or produces fake accounts or documents or furnishes any false information or return with an intent to evade payment of tax. So अगर कोई भी tax payer fake account submit करता है, fake documents करता है with the intention to evade taxes, then such act also is liable for penalty under section 122. उसके अलावा अगर कोई भी टैक्सेबल पर्सन है उसकी लायबिलिटी थी रजिस्ट्रेशन लेने की बट वो नहीं ले पाया, he fails to obtain registration, then that act also is liable to penalty. So apart from that कुछ और भी स्पेसिफाइड ऑफेंसेस हैं, जैसे कोई भी टैक्सेबल पर्सन अपनी टर्नओवर को सप्रेस करता है लीडिंग टू इवेजन ऑफ टैक्सेस, दैट इज आल्सो अ स्पेसिफाइड ऑफेंस. Fails to keep, maintain or retain books or account and other documents in accordance with the provisions of this act. So अगर books of accounts ही maintain नहीं कर पाता as per the law, then also the taxpayer is liable for a penal action under section 122. Apart from that, ये एक general और procedural penalties हैं. Fails to furnish information called by the officer, issues any invoice or document by using GST number of another registered person. अगर कोई भी taxpayer invoice issue करता है किसी और का GST number use करके, so that is also a specified offense under section 122. Tamper करता है, destroy करता है any material evidence, that is also a specified offense. Apart from that, disposes of or tampers with any goods that have been detained, seized or attached. So अगर कोई भी goods जो है
वो प्रॉपर ऑफिसर ने डिटेन करे हैं, सीज करे हैं, अटैच करे हैं और उसको डिस्पोज ऑफ करता है, टैम्पर करता है, सो ये भी एक पेनल्टी का कारण बन सकता है अंडर सेक्शन 122. सो these some of the offenses are related to tax evasion, and some are related to procedural lapses that might occur, that might happen because of any lapses of the taxpayer. सो भाई 21 ऑफेंसेस तो हमने डिस्कस करे हैं. अब बात आती है कि पेनल्टी लगेगी कितनी. सो सेक्शन 122(1) में लिखा है दैट पेनल्टी शैल बी हायर ऑफ अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज और एन अमाउंट इक्वल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग. सो पेनल्टी क्या होगी? हायर ऑफ 10,000 रुपए या अमाउंट इक्वल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज टैक्स इवेडेड, tax not deducted or short deducted, tax not collected or short collected, input tax credit availed or passed on distributed irregularly, or the refund claimed fraudulently. So इसको, इस प्रोविजन को देख के ये लगता है कि जो पेनल्टी होगी वो टैक्स एवेडेड या 10,000 रुपए से ज्यादा जो होगा उसकी इक्विवेलेंट होगी. सो टैक्स एवेडेड वर्ड यूज किया गया है सेक्शन 122(1) में. सो टैक्स एवेडेड एज अ लेमैन अगर मैं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि टैक्स इवेजन जो है वो ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दिया गया है, क्योंकि टैक्स एवेडेड का मतलब है कि किसी भी टैक्सेबल पर्सन ने टैक्स एवेड कर दिया है और वो टैक्स जो है वो क्वांटिफाई हो चुका है इनफैक्ट. So, the words that are used in this section is tax evaded, tax not deducted, tax not collected, ITC passed or availed irregularly, or refund claimed fraudulently. So, इसको पढ़ के ये लगता है कि जो असेसमेंट है या डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स है अंडर सेक्शन 73 और 74, दैट उसको दैट सीम्स टू बी एसेंशियल कि एक बार डिटर्मिनेशन होना चाहिए, टैक्स एवेडेड जो है वो पता लग जा, वो डिटरमाइन होना चाहिए बाय द प्रॉपर ऑफिसर, एंड देयर आफ्टर जो पेनल्टी है सेक्शन 122 में लगनी चाहिए, विच शैल बी हायर ऑफ द अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज और द टैक्स एवेडेड. सो इन सब वर्डिंग्स को ये साथ अगर हम पढ़ेंगे तो यही एक चीज इमर्ज होकर आती है दैट असेसमेंट जो है या डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स है, दैट इज एसेंशियल टू क्वांटिफाई द टैक्स एवेडेड अंडर सेक्शन 73 और 74, सो दैट पेनल्टी जो है सेक्शन 122 में लग जाए. इसके बाद जो सेक्शन 122(1) बात करता है वो कहता है कि एनी पर्सन. सो अभी जो 1 में था प्रोविजन वो था एनी टैक्सेबल पर्सन का. जो 1 बात करता है वो बात करता है एनी पर्सन हु रिटेन्स द बेनिफिट ऑफ अ ट्रांजैक्शन कवर्ड अंडर क्लॉजेस 1, 2, 7 और क्लॉज 9 ऑफ सबसेक्शन 1 and at whose instance such transaction is conducted shall be liable to penalty of an amount equal to the tax evaded or ITC availed or passed off. सो अगर कोई भी पर्सन है, चाहे वो रजिस्टर्ड है नहीं है, अगर वो कोई भी बेनिफिट रिटेन करता है फेक इनवॉइसिंग के केसेस में, सो उसके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी दैट शैल बी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ टैक्स एवेडेड और आईटीसी क्रेडिट अवेल्ड और पास्ड ऑन. सो यहाँ पर भी जो वर्ड है वो टैक्स एवेडेड यूज हुआ है. सो किसी भी पर्सन के ऊपर पेनल्टी लगेगी अगर कोई बेनिफिट अराइज करता है, उसको अराइज होता है ऑन अकाउंट ऑफ फेक इनवॉइसिंग थिंग्स, सो पेनल्टी जो होगी वो टैक्स एवेडेड होगी इनफैक्ट. सो इट इज एसेंशियल कि टैक्स एवेडेड जो है वो प्रूव हो. सो ये बार बार चीज एक निकल के आती है सेक्शन 122 पढ़ के दैट टैक्स एवेजन इज इंपॉर्टेंट. द प्रॉपर ऑफिसर शुड डिटरमाइन टैक्स एवेजन एंड क्वांटिफाई द टैक्स एवेजन. सो 74 में या 73 में टैक्स एवेजन डिटरमाइन करना इज एसेंशियल टू लेवी पेनल्टी अंडर सेक्शन 122(1), क्योंकि जो वो लिंकेज है वो टैक्स एवेडेड से है इसके अंदर. और इसमें एक क्वेश्चन और है मेरा दैट पेनल्टी ऑन अनरजिस्टर्ड पर्सन के एनी पर्सन लिखा है वर्ड, तो अगर कोई पर्सन जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है सो क्या उसके ऊपर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है? सो इंटेंशन ऑफ द लॉ इज कि हाँ लगाई जा सकती है, तभी जो वर्ड है वो एनी पर्सन यूज किया गया है यहाँ पे. So thereafter, subsection 2 of section 122 states that any registered person who supplies any goods or services or both, or which any tax has not been paid, short paid, or erroneously refunded, or where the ITC has been wrongly availed or utilized. So registered person के ऊपर penalty लगाई जा सकती है. टैक्स शॉर्ट पेड है, नॉट पेड है, रिफंड एररली ग्रांटेड हुआ है, या आईटीसी शॉर्ट अवेल रॉन्गली अवेल्ड है, यूटिलाइज्ड है. सो रीजन अदर देन फ्रॉड में जो पेनल्टी लगेगी वो होगी 10,000 रुपीज और 10% ऑफ द टैक्स ड्यू. फॉर रीजन अदर देन फ्रॉड या विलफुल मिसस्टेटमेंट का होगा पेनल्टी, वो होगी इक्वलेंट टू द टैक्स ड्यू और 10,000 रुपीज विच एवर इज हायर इन फैक्ट. सो ये सेक्शन 122(2) के अंदर जो पेनल्टी है ये 73 में भी दी गई है, 74 में दी गई है. इनफैक्ट 73 बात करता है 10% ऑफ द टैक्स ड्यू और पेनल्टी विच एवर इज हायर,
और सेक्शन 74 बात करता है पेनल्टी इक्विवेलेंट टू द टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर। सो बेसिकली जब हमारा 73 और 74 में ये प्रोविजन डाला गया है, सो वापस इस प्रोविजन को यहाँ डालने की जरूरत क्या है इनफैक्ट, सो क्योंकि ये रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर लगती है, वर्डिंग जो है बिल्कुल सिमिलर है। सो दिस इज वन क्वेश्चन दैट माय कोलीग प्रांशु जी विल डिस्कस कि क्या होना चाहिए कि अगर 73 74 में पेनल्टी लग गई है तो क्या वो सेम ऑफेंस के लिए सेक्शन 122(2) में लग सकती है, क्योंकि वर्डिंग्स जो है बिल्कुल सेम है इनफैक्ट। सो देयर आफ्टर सेक्शन 122(3) जो है वो बात करता है पेनल्टी लेवेबल ऑन एनी पर्सन। सो यहाँ पर भी जो वर्ड है वो एनी पर्सन है हु एड्स और अबेट्स एनी ऑफ द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1 to 21 ऑन सेक्शन 1। अगर कोई भी पर्सन जो है वो एड एड करता है कोई भी ऑफेंस करने करने में टू अ टैक्सेबल पर्सन जो स्पेसिफाइड है 21 स्पेसिफाइड क्लॉजेस में, अगर वो हेल्प करता है तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी इनफैक्ट। उसके अलावा acquires possession of or in way concerns himself in transporting, removing, depositing, supplying, purchasing, deals with any goods which he knows or has reason to believe are liable to confiscation, ये भी एक specified offense है। fails to appear before the officer of central tax when issued with a summon for appearance to give evidence or produce a document in an inquiry, fails to list invoice in accordance with the provisions of this act or the rules made thereunder, or fails to account for invoice in his books of accounts। सो ये सब एक स्पेसिफाइड ऑफेंस है जो एनी पर्सन के ऊपर लग सकते हैं, और उसके ऊपर जो पेनल्टी है वो एक्सटेंड हो सकती है अप टू 25,000 रुपीज। सो 122(3) में भी एक पेनल्टी लगाई गई है एनी पर्सन के ऊपर कि अगर कोई भी स्पेसिफाइड ऑफेंस एड करने में वो मदद करता है, हेल्प करता है, तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है इनफैक्ट। So this section imposes penalty on any person, not just the taxpayer or registered person, but also an unregistered person who is involved in specific activities connected with the tax evasion or handling of goods services that violates GST laws. So इसमें knowledge और reason to believe crucial है। Penalty applies only if person knew or should have known about the illegality. So third parties पे भी लग सकता है, transporters पे, warehouse owners पे, brokers पे, if they had assisted in tax evasion. So penalty is separate from the main offenders penalty. Even facilitators can be independently penalized. So ये section जो है ये पेनल्टी की एम्बिग्यूटी को और बढ़ाने के लिए इनकॉर्पोरेट किया गया है कि अगर जो थर्ड पार्टीज हैं लाइक ट्रांसपोर्टर्स, वेयर हाउस ओनर्स, ब्रोकर्स जो हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं इन टैक्स एवेजन ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन, देन उनको भी पेनल्टी लगाई जा सकती है बाय वर्च्यू ऑफ दिस सबसेक्शन। सो सेक्शन 122, 73, 74 और 74A पढ़ के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने डिस्कस करे वो ये हैं दैट आर प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 122 इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट फ्रॉम सेक्शन 73 और 74। देखिए हमने सेक्शन 122 को पढ़ा था, उसमें जो पेनल्टी का क्वांटम है दैट सेज टैक्स एवेडेड। सो अगर टैक्स एवेडेड के ऊपर पेनल्टी लिंक्ड है, टैक्स एवेडेड के बराबर पेनल्टी अगर होगी, सो दैट मीन्स हमें सेक्शन 73 या 74 में डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो क्या जो प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 122 है वो इंडिपेंडेंट है? क्या सिर्फ सेक्शन 122 की पेनल्टी लगाई जा सकती है इंडिपेंडेंटली विदाउट डिटरमाइनिंग टैक्स अंडर 73 और 74, टैक्स इवेजन अंडर 73 और 74? सो ये क्वेश्चन है जो विच विल बी डिस्कस्ड अभी बाय प्रांशु जी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो नेचर ऑफ पेनल्टीज है सेक्शन 122 का, क्या है, सिविल है, क्रिमिनल है? क्या जो नेचर ऑफ पेनल्टीज हैं वो सिविल नेचर की हैं, क्रिमिनल की हैं? क्योंकि अगर सिविल नेचर की होंगी तो ऑब्वियसली प्रॉपर ऑफिसर उनको लेवी कर सकता है, बट अगर वो सिविल क्रिमिनल नेचर की होंगी देन बट ऑब्वियस है वो प्रॉपर ऑफिसर नहीं, वो सिर्फ एक कोर्ट ही लेवी कर सकता है इनफैक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्शन 122 जो वर्ड्स यूज करता है वो यूज करता है टैक्स एवेडेड, टैक्स नॉट डिडक्टेड और शॉर्ट डिडक्टेड, टीसीएस नॉट कलेक्टेड और शॉर्ट कलेक्टेड, आईटीसी irregularly availed or distributed, refund erroneously claimed. By going through these words, it is quite clear that इसके लिए प्रायर डिटर्मिनेशन जरूरी है, एजुडिकेशन जरूरी है अंडर सेक्शन 73 एंड 74 टू सब्सटैंशिएट टैक्स इवेजन। 73 74 में आप टैक्स एवेजन सब्सटैंशिएट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उसी के बाद 122 की पेनल्टी जो है वो आप लगा सकते हैं और क्वांटिफाई कर सकते हैं इनफैक्ट। So section 122 merely states a person shall be liable to a penalty for specified offenses। जैसे हमने सेक्शन 122 उनकी स्टार्टिंग में पढ़ा था दैट अ पर्सन शैल बी लायबल टू पेनल्टी, बट कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी है कि हु विल इशू अ शो कॉज नोटिस,
और एजुडिकेट करेगा कौन, इनफैक्ट प्रॉपर ऑफिसर करेगा या कौन सा ऑफिसर करेगा, ये बात क्लियरली नहीं आ रही। जबकि 73, 74 और 74A में क्लियरली लिखा हुआ था कि प्रॉपर ऑफिसर जो है वो डिटरमाइन करेगा, वही इशू करेगा शो कॉज नोटिस, वही ऑर्डर पास करेगा इनफैक्ट। बट सेक्शन 122 इज साइलेंट on these procedural aspects. Apart from that, what is the timeline to issue show cause notice and adjudicate complete proceedings under section 122? So जैसे 73, 74 में 3 साल 5 साल की टाइमलाइन दी गई है, there is no specific timeline under section 122 that what is the time limit to issue a show cause notice and what is the time limit to complete the proceedings. So section 122 is silent on this aspect as well. So as I told you, सेक्शन 122 और 73 और 74 में कुछ पेनल्टीज हैं वो जो कॉमन है। जो 10% वाली मैंने अभी स्लाइड बात करी थी, ये वाली, कि जो 10% अगर फ्रॉड का केस होगा तो 100% लगेगी, नॉन फ्रॉड होगा तो 10% लगेगी। 73 में भी लिखा गया है, 74 में भी बात है और सेक्शन 122 में भी बात करी गई है। सो क्या एक एडिशनल पेनल्टी लगाई जा सकती है फॉर द सेम ऑफेंस? क्योंकि 122(2) ये बात करता है कि हाँ एक पेनल्टी लग सकती है ना रजिस्टर्ड पर्सन। सो सेक्शन 75(13) की मैंने यहाँ पे बात करी थी कि नो पेनल्टी शैल बी लेविएट फॉर द सेम एक्ट अगर वो 73, 74 में लगा दी गई है। सो इन दैट केस कैन एन एडिशनल पेनल्टी कैन बी लेविड, सो दिस इज वन क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड। Apart from that, can a non-registered person be penalized under GST law? Because 122(3) के अंदर और 1A के अंदर जो वर्ड यूज किया गया वो एनी पर्सन यूज किया गया है इनफैक्ट। सो जो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन होंगे क्या उनके ऊपर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है? सो these provisions are giving undue powers to the officers to levy penalty or any person. Apart from that, there is one ambiguity that whether penalty is mandatory or discretionary. So whether penalty under section is 122 is automatic. मान लेते हैं if there is a show cause issued under section 74, tax is levied and penalty is levied, and thereafter the demand is confirmed and 100% penalty is levied. So whether section 122 में भी additional penalty लगेगी automatically. So this is another ambiguity, that needs to be answered and clarified by the government. So apart from that, section 125 है, एक और प्रोविजन है पेनल्टी के ऊपर जो बात करता है, जो जनरल पेनल्टी की बात करता है, that says any person who contravenes any of the provisions of this act or any rules made thereunder for which no penalty is separately provided for in this act shall be liable to penalty which may be extended to 25,000 rupees. सो एक और प्रोविजन है 125, 122 तो वैसे ही इतना वास्ट है, इतने प्रोविजंस, इतने स्पेसिफाइड ऑफेंसेस कवर करता है। उसके अलावा एक और पावर है जीएसटी ऑफिसर्स के पास टू लेवी जनरल पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज अंडर सीजीएसटी एक्ट एंड ऑब्वियसली 25,000 अंडर एसजीएसटी एक्ट, कि अगर कोई भी पेनल्टी स्पेसिफाइड नहीं है सो उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है 50,000 रुपए की। सो क्या ये यहाँ पर भी मेरा यही क्वेश्चन है दैट can a non-registered person be penalized under GST law, because the words that are used here are any person and not any taxable person. So section 126 talks about general disciplines related to penalty. So जैसे 75 सेक्शन कुछ डिसिप्लिन्स की बात करता है, ऐसी सेक्शन 126 भी बात करता है। सो इसमें जो बात करी गई है वो ये है दैट नो ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल, नो ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल impose any penalty for minor breaches, omissions or mistakes in documentation. So अगर कोई भी minor breach होगा, omission mistake होगी, उसकी penalty नहीं लगनी चाहिए। So a breach shall be considered as a minor breach. इसके ऊपर एक explanation है कि अगर amount of tax involved है 5,000 से नीचे, so minor breach में माना जाएगा in fact. And इसमें भी specifically बात करी गई है under subsection 3 that no penalty shall be imposed on any person without giving him an opportunity of being heard. So पर्सनल हियरिंग देना बड़ा जरूरी है बिफोर पासिंग एन ऑर्डर ऑफ पेनल्टी। अपार्ट फ्रॉम दैट the officer as per subsection 4, the officer under this act shall, while imposing penalty in an order for a breach of law or procedural requirement, specify the nature of breach and the applicable law, regulation, procedure under which the amount of penalty for the breach has been specified. So जब भी penalty का ऑर्डर आएगा तो प्रॉपर ऑफिसर को नेचर क्लियरली बताना है। दीज प्रोसीजर्स आर इन लाइन विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस दैट जो भी पेनल्टी का ऑर्डर पास हो रहा है उसका स्पेसिफाइड
स्पेसिफिक ब्रीच और नेचर बताना पड़ेगा कि क्यों पेनल्टी लगाई गई और क्यों उसका ऑर्डर में पेनल्टी कंफर्म करी गई है इनफैक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसेक्शन 6 जो है वो बात करता है द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन shall not apply in such cases where the penalty specified under this act is either a fixed sum or expressed as a fixed percentage. सो जो पेनल्टी है अंडर जीएसटी एक्ट वो या तो फिक्स सम में है 25,000 50,000 या फिक्स परसेंटेज है 10% और 100%। सो मोस्टली जो प्रोविजंस हैं उन सब में ही जो पेनल्टी है वो फिक्स सम या परसेंटेज की बात करी गई है। सो आई डोंट नो व्हाई सब सेक्शन 6 में बात करी गई है कि भाई प्रोविजन से वाले सेक्शन के अप्लाई नहीं करेंगे। आई मीन व्हाट इज द इंटेंट ऑफ दिस सबसेक्शन, ये इस पे कोई क्लैरिटी भी नहीं है इनफैक्ट। So thereafter, there is one more section, which is section 127, which states the power to impose penalty in certain cases. So एक और पावर दी गई है, मतलब there are a lot of powers that has been given regarding penalty. एक और दी गई है वो है 127 के अंदर, which states that where any proper officer is of the view that a person is liable to a penalty and the same is not covered under any proceedings under section 62, 63, 64, 73, 74 or 74A or 129 or 130A. He may issue an order levying such penalty after giving a reasonable opportunity of being heard. So एक और पेनल्टी की पावर दी गई है कि अगर 73, 74 में कुछ ऑफेंस कवर नहीं हो रहा या 62, 63 में कवर नहीं हो रहा या 129 या 130 में कवर नहीं हो रहा तो वहां पर भी प्रॉपर ऑफिसर जो है पेनल्टी लगा सकता है इनफैक्ट। सो यू नो अगर कहीं पेनल्टी नहीं बचती तो वह सेक्शन 127 में भी प्रॉपर ऑफिसर पेनल्टी लगा सकता है। सो यू नो these were the broad provisions that I wanted to discuss, और मैं ये बेसिकली हाईलाइट करना चाहता था कि सेक्शन 122 को पढ़ के और बाकी पेनल्टी के प्रोविजंस को पढ़ के इट सीम्स दैट अभी ये जो लॉ है या पेनल्टी प्रोविजंस हैं ये बड़े ही पुअरली ड्राफ्टेड करे गए हैं क्योंकि प्रॉपर ऑफिसर के पास अननेसेसरी पावर्स हैं टू लेवी पेनल्टी। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी रिसेंटली बहुत सारे नोटिस इशू हुए हैं ऑन अकाउंट ऑफ फेक इनवॉइसिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19। सो मेनी ऑफ द शो कॉज नोटिस हैव बीन इशूड ऑन सेक्शन 122। सो 122 बात करता है टैक्स इवेजन की। अगर 73 74 में टैक्स इवेजन ही स्टैब्लिश नहीं हुआ तो क्या वो सेक्शन 122 का नोटिस इज बैड इन लॉ या नहीं, इनफैक्ट ये चीज जानना बड़ा जरूरी है इनफैक्ट। सो इसी की डिस्कशन जो होगी वो आगे प्रांशु जी मेरे कुलीग है वो कंटिन्यू करेंगे। सार्थक जी, सर एक क्वेश्चन आया है हमारे यूजर का। वो जानना चाहते हैं कि क्वेश्चन 74 और क्वेश्चन विकास जी क्वेश्चन है एंड में ले लेंगे क्योंकि हम दोनों का जो सेशन है ना वो जी जी कंबाइंड ही है, तो मे बी कुछ आंसर्स ये वाले सेशन में अभी सॉल्व हो जाएं क्योंकि एफएक्यूज ही बनाया है प्रांशु जी ने विच जी माइट सर जी हेल्प। क्वेश्चन सारे ले लेंगे बट आफ्टर बोथ दी सेशंस। ठीक है सर। ठीक है ठीक है ओके। तो शुरू करवाएं फिर प्रांशु सर से रिक्वेस्ट करें। जी सर। हाँ, तो नाउ आई रिक्वेस्ट सीए प्रांशु जी टू प्लीज स्टार्ट योर डेलिब्रेशन। Thank you so much, Raj Chawla ji, for giving us this opportunity to share our views over your esteemed platform. It's been long, and I remember we did one seminar last year on similar aspects. So, today's point of discussion and uh, center point is around penalties under GST. And specifically, why we chose this topic and why this came to our mind is because of the judgment which came in the case of Patanjali by the Honorable Allahabad High Court. So, when I was reading that judgment, I was intrigued by the arguments which were taken by the council of the Patanjali, because almost all the arguments which were taken in Patanjali were on the first principles of law, rather than specifically focusing on the provisions of the law. And then I read the provisions under GST under penalty.
which says section 122, 123, 124, 125, read with section 73 and 74. And I realized that the provisions either were drafted in a haste or are very poorly drafted because they're not structurally aligned. If you go through the penalty provisions under these sections, say section 122 of the Act or section 73, 74, and if you compare these sections with Income Tax Act, generally we are students of tax laws, so we generally compare one indirect tax with direct tax, and at most of the times when we are arguing also before the tribunal, before the honorable courts, we do generally follow case laws which are decided under income tax law with GST on first principles of law. And when I was comparing both these laws, I understood that income tax law is very well structured, specifically with relates to penalty and prosecution provisions vis-a-vis GST law. If you consider CGST Act and if you consider Income Tax Act for that matter, from the very beginning, section 122 till section 126, 127, if you go through all these sections, there is no clarity about the jurisdiction of the officer who will issue the notice. There is nothing clearly mentioned. On the contrast, if you see section 270A of the Income Tax Act, that specifically provides for jurisdiction of the assessing officer. If you specifically see section 271D, it provided for the jurisdiction of the additional commissioner under Income Tax Act, though it has now changed to assessing officer. But Income Tax Act did provide for the jurisdiction. However, GST law on the other side does not clearly specifically provide for such kind of jurisdiction. Similarly, as student of tax laws, we always understood that penalty follows assessment. पेनल्टी तो बाद में ही लगती है, प्रोसिक्यूशन तो होगा तो बाद में होगा, with few exceptions. पेनल्टी पहले नहीं लग सकती until unless it is a procedural error, a procedural issue. Generally, it follows the assessment. However, if we read the judgment, I'll come to the judgment, I'll discuss that. And if we read the overall structure of the penalty provisions under the GST law, it gives an idea, or it hints that the legislature wants, or the intention of the legislature is to levy penalty independent of the assessment under 73 or 74 of the GST Act. Because the way the section 122 is worded, it specifically delink section 73 and 74 for that matter. Furthermore, there is no timeline which is provided in the GST Act for levying such penalty. There is no timeline for issuance of the notice. There is no timeline for passing of the order. Whether a reasonable period should be considered as decided by the judiciary, whether judge-made law would prevail in such a situation where the written law is silent, we have to see. And this whole law would evolve over the period of time, because it's new and penalty provisions have just kicked in last 1 or 2 years, wherein penalties have started being levied. So at least related to evasion of tax, 73, 74, etc. Similarly, on the other side, if you see section 275 of the Income Tax Act, that specifically provides for the limitation period under the Income Tax Act for passing of penalty orders after assessment order or after CIT appeal order, but section 275 is very much clear about the limitation period. But GST law is silent on that. Now coming to the decision of the Honorable Allahabad High Court in the case of Patanjali, and why it fueled the discussion which we are having today, and how it triggered us to bring this topic with all of yourselves. In Patanjali, it's a very peculiar fact.
in Patanjali, a notice under section 74 was issued to Patanjali for circular trading, wherein Patanjali and Patanjali group of companies, so there were three companies in that notice. Patanjali and Patanjali group of companies were accused or were alleged that they were doing circular trading and they were issuing fake invoicing. So there was no supply of material, there was no supply of goods, but only invoices were being issued by these entities. And similarly, along with section 74 show cause notice, at the end of the notice, these entities were also show cause that why penalty under section 122 subsection 1 for fake invoicing and passing on incorrect ITC should not be levied on them. Now, lately, during the course of adjudication under section 74, interestingly, on certain parameters, section 74 proceedings were dropped against Patanjali and their group of companies. They were dropped on various reasons, because of jurisdictional issue or because tax was already collected from them. They have already paid the tax since they have issued the invoices and filed the return. So tax was already paid by them. Although it's a fake invoicing case, there is no supply. But since bills were issued, tax was already declared under GSTR 3B, GSTR 1. So in that case, since tax was not recoverable from them, under section 74, proceedings were dropped against them. But the proceedings for penalty under section 122 were continued against them, which triggered this writ petition before the Honorable Allahabad High Court by Patanjali. Patanjali's made two arguments primarily. First, Patanjali said that proper officer has no jurisdiction under the GST Act to levy such penalty under section 122. The argument of the council, which was very surprising to me, was that section 122 is a criminal procedure, criminal section. And judicial magistrate can only have jurisdiction over levying such penalty, as there is no jurisdiction provided under the Act. And since it is a criminal offense, it is not a civil offense, and hence judicial magistrate should have the power and not the proper officer or any other officer under the GST law. Second argument of the council of Patanjali or of Patanjali was that since the proceedings under section 74 of the Act were dropped, and if we read explanation 1, sub-explanation 2 of section 74, according to that explanation, penalty also should be dropped. Because if you read explanation 1, sub-explanation 2 of section 74, that specifically says that if proceedings under section 74 are concluded, then proceedings under section 122 of the Act shall be deemed to be concluded. However, the court had a different view in both these issues, and the writ petition filed by the petitioner was rejected. What did the court say? I'll come to that, and I'll ask Sarthak ji if he can share the PPT. Or I'll try to share it. Is it visible? Yes, sir. This is visible. नहीं, I don't think. Pranshu, अभी visible नहीं है presentation. Is it visible now? नहीं, it is not visible. आप शेयर कर दो सार्थक जी. Okay.
So first question which actually arose in these FAQs was, who can issue and adjudicate on a notice under section 122 of the CGST Act? According to Patanjali, the law doesn't provide for the jurisdiction, and rightly so. I am in agreement with Patanjali on this point. If you read section 122, 123, 124, 125, there is no specific provision which specifically provides who will issue and who will adjudicate upon the penalty notices. The Honorable Court, after considering the provisions under the GST law, said, and surprisingly said, that on reading of the GST law, it indicates, the word used by the Honorable Court was indication, that it indicates that the intention of the law is to give jurisdiction to the proper officer. So why Honorable Court came to that conclusion? Honorable Court said that if you read section 74 and if you read explanation 1 sub explanation 2 to section 74, it gives an indication that the person who is initiating the proceedings under section 74 has also the power to initiate penalty under section 122 of the Act. Why? Because of explanation 1 sub explanation 2 of section 74, which indicates that the person has the power, the proper officer has the power, because if the proceedings under section 122 has to be dropped, if 74 proceedings are concluded, then it has to be done by the same person. So they said that it indicates that this power is with the proper officer. Next slide, Sarthak ji. Similarly, if section 83 of the Act be read, that section 83 provides for provisional attachment under the GST law. That section provides that provisional attachment can be done by commissioner during the course of pendency of the penalty proceeding under section 122 subsection A of the 1A of the CGST Act, which also gives an indication that commissioner, the proper officer, has the power to levy penalty. Thirdly, if you read Rule 142 of the CGST rules, Rule 142 of the CGST rules provide for issuance of GST DRC 01 along with any other show cause notice. That rule also specifies that the proper officer shall serve along with the notice issued under section 73, 74, 122, 124, 125, 127, etc. a summary in the form of GST DRC 01. So Rule 142 also provides this power to the proper officer. So the Honorable Court gave a purposive interpretation to this and said that on reading of section 74, section 83 and Rule 142, we come to a conclusion that it indicates that the proper officer has the power to adjudicate upon section 122 penalty notices or other penalty notices under the Act. However, the Act is silent on that until and unless we see section 127 of the CGST Act. Now, if you see section 127 of the CGST Act, which is at the bottom of the slide deck, what does it say? It says where the proper officer is of the view that a person is liable to a penalty and the same is not covered under any proceedings under section 62 or 63 or 64 or 73 or 74 or 129 or 130. He may issue an order levying such penalty after giving a reasonable opportunity of being heard to such person. So it specifically provides for passing of an order and giving a reasonable opportunity of being heard. So basically it's a section of natural justice कि भाई hearing वेयरिंग आपको देनी पड़ेगी order pass करने से पहले. But ये power देता है proper officer को for doing this.
and it excludes only section 62, 63, 64, 73, 74, 129, 130. That means section 122 to 127 are included in this, and the proper officer, while levying penalty under those sections, has to give a reasonable opportunity of being heard. So if he is passing the order, this also indicates somewhere that proper officer shall issue the notice as well. So all this, who can issue and adjudicate upon notices under penalty, as per the Honorable Allahabad High Court, has been power adjudicated upon proper officer only on the basis of a harmonious construction of the Act, on purposive interpretation of the Act, after considering various provisions of the law which indicates that proper officer has the power, though the law doesn't specifically provide so. Now, next question, next slide, Sarthak ji. Now, coming back to our last point which we discussed prior, that the law doesn't provide for the limitation period under penalty. If you read section 74 or section 75, if you read under the GST law, it 73, 74 does provide for timelines for levy of or for issuance of show cause notices under 73 and 74 and passing of orders under section 73 and 74. Section 70 and 74 are very clear on that. But there is no provision which specifically provides for any limitation period for levy of penalty under GST law. Then what would happen in such a situation? This made me recall the search provisions under the Income Tax Act. Under the Income Tax Act also, if there is a search at some place, some person's place, and a case of another person is opened, so that primarily fell into section 153C of the Income Tax Act. If you see the provisions of section 153C of the Income Tax Act, which prevailed previously, there was no provision of timeline under section 153C of that. There was no provision that by when a notice under section 153C could be issued. And in that case, the matter went to Supreme Court, and my Honorable Supreme Court in the case of Calcutta Knitwears has clearly held that if no timeline, if no limitation period is provided under the Act, then one has to see whether it is a reasonable period or not. What is a reasonable period would depend upon the facts of each case. Similarly, Honorable Supreme Court in the case of Citadel Fines Pharmaceuticals exactly held the same, that in the absence of a period of limitation, a reasonable period has to be construed. It would totally depend upon the facts of each case. In Calcutta Knitwear, Honorable Supreme Court said that if the proceedings of the main person have been concluded, then the proceedings of the other person would be initiated maximum within a period of 6 months from the closure of the proceedings of the main person. And beyond that, any period beyond that would be construed beyond the reasonable period. So now under GST law, whether we can construe that if proceedings under section 74 have been concluded, if the proceedings under section 73 have been concluded, and there is a reasonable time period, say 74 proceedings are concluded today, then can we construe that a 3 months period down the line or 6 months period down the line is the only reasonable period for issuance of penalty notice under 122 or for levying a penalty under 122, and anything beyond that would be considered as barred by limitation? The law doesn't provide, but can we put this argument before the court? In my opinion, yes. If a proceeding, which is a main assessment proceeding, is concluded, then penalty ideally should initiate simultaneously. And if there is a time gap of say 2 or 3 or 6 months down the line, that can be construed as beyond a reasonable period of time. Sarthak ji, next slide, please. Section 75, subsection 10 comes into picture in this case, which says that if
no order is issued within the timeline provided under section 73 subsection 10 and 74 subsection 10, then adjudication proceedings shall be deemed to be concluded. Now, if we read this 75 subsection 10 with explanation 1 sub explanation 2 of section 74, that if proceedings are deemed to be concluded under 74 and 73 beyond their timeline under subsection 10 of specific respectively of both the sections, then how section 122 penalty can survive in that case? Because explanation 1 sub explanation 2 specifically provides that if penalty proceedings are concluded under if adjudication proceedings are concluded or deemed to be concluded under section 74, then they would be deemed to be concluded under section 122. So if 75 subsection 10 comes into play, and if there is no order passed under 7410 or 7310, then whether 122 can be invoked or not. So in my view, if we read 7510 or maximum 2 or 3 months down the line, it should not exceed that. It would be beyond the reasonable period. Next slide, Sarthak ji. Now, this is one of the dilemmas and one of the most discussed, deliberated discussion amongst me and Sarthak ji. We have discussed this many times. क्या 122 और 73, 74 इंडिपेंडेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है? इसका straight forward answer I would say, whether we have it today, maybe we in our minds have it. We as an argument for our clients are taking it, but whether we have jurisdictional or juridical precedent for that, no, we do not have much precedent on that, except Allahabad High Court, which in my view is per se not that clear on this point. Section 122 is a charging section. Let's be very clear about it. It specifically says कि penalty किस condition में लगेगी. वो ये नहीं बताता कि penalty लगेगी कैसे. So it lacks procedural guidance. It is not a machinery provision. It is basically a charging section. If you see section 122, there are certain offenses which you would see are linked to section 73 or 74 adjudication. Like as Sarthak ji said, that while discussing section 122, if you read at the end, section 122 क्या कहता है? Section 122 says that penalty should be levied either a fixed sum of money which is provided under that section, or percentage of tax ought to be evaded, etc., which is a similar line or similar context which is provided under section 73 and 74. It is on that similar line. So section 122 के अगर हम सारे offences पढ़ते हैं, 21-22 offences जो section 122 में लिखे हैं, वो कुछ provisions तो procedural है. Return file नहीं करी, invoice गलत issue करा, etc., procedural penalties हैं, जो tax evaded या tax ought to evaded से जिसका कोई link नहीं है. जो section इनकम टैक्स एक्ट में भी, जैसे आपने रिटर्न फाइल नहीं करी उसकी 5,000 की पेनल्टी है, आपने टैक्स ऑडिट नहीं कराई उसकी पेनल्टी है, आपने ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट नहीं कराई उसकी पेनल्टी है, आपने कैश में माल बेच दिया, कैश में माल खरीद लिया, उसकी 271D में पेनल्टी है. दैट पेनल्टीज अंडर इनकम टैक्स एक्ट आर वेल डिफाइंड, प्रोसीजरल है, उसका फिक्स सम ऑफ मनी है. Some penalties are not procedural. Some penalties are dependent upon my assessment. Some penalties do relate to my tax evasion. Tax ought to be evaded. Now, supposedly, we take case of Patanjali.
wherein the proceedings under section 74 were dropped. When the proceedings under section 74 were dropped for various reasons, कि ठीक है उन्होंने टैक्स ऑलरेडी जमा करा दिया, सप्लाई है बट इवेजन ऑफ टैक्स नहीं था, 74 ड्रॉप कर दिया, हम उनसे और टैक्स नहीं ले सकते, डबल जो पार्टी हो जाएगी, 74 में ड्रॉप हो गया। अब 74 में कोई एडजुडिकेशन तो हुई नहीं कि कितना टैक्स इवेड करा उन्होंने या कितना टैक्स ऑट टू बी इवेडेड है, आपने तो उसको ड्रॉप कर दिया। So once section 74 was dropped, there was no adjudication, there was no assessment, and there was no computation of the tax ought to be evaded. When there is no computation of the tax ought to be evaded, then how penalty for those offences can be levied under section 122? Can an independent adjudication would again happen under section 122? And if yes, from where that power is coming? There is no power which is coming. That power would come under 73 and 74. But so again, if you read section 122, in my take, there are some procedural offenses and there are some offenses which relates to your adjudication or assessment, जैसे इनकम टैक्स एक्ट में होता है। सेक्शन 270A की पेनल्टी तभी लगेगी जब इनकम टैक्स एक्ट में असेसमेंट ऑर्डर में असेसमेंट हुई, एक या 271AA की पेनल्टी लगेगी जब आपकी वो इनकम इवेजन वाली इनकम या एडिशन असेसमेंट ऑर्डर में हुई। सिमिलरली यहाँ पे भी तो मेरे 73 और 74 ही असेसमेंट ऑर्डर है। सो इफ सेक्शन 73, 74 assessment order or adjudication order is not there, how can penalty under 122 be levied, at least on those allegations? But 122, as I said, is a charging section. It is not a procedural section. It is not a machinery section. So bifurcating this on this argument is very, very difficult. Next slide, Sarthak. Interestingly, इस पे एक सर्कुलर आ गया, सर्कुलर नंबर 171 dated 6 July 2022. It is very, very interesting circular, and I'm telling you, I can bet that this circular would do another set of litigation read with 73, 74 and 122. That circular, if you go and read, specifically provide that 73, 74 and 122 can be independent of each other. That circular says and suggests that the intention of the legislature is very clear. That if 73 and 74 is dropped, penalty under 122 can still be levied. So under Patanjali, this circular was invoked. And Honorable Court said that as per this circular, even though 74 was dropped, but penalty under 122 can be levied independent of 74 and 73. Now, we all know that circulars are not binding on the assessee, on the taxpayer, but circulars are binding on the department. Circulars are not binding on the courts, circulars are not binding on the assessee, on the taxpayer, but circulars are binding only on the department, UCO Bank, KP Varghese, Supreme Court. Can we only rely upon the circular? And can this circular be contradictory to the provision of law? The law specifically doesn't provide dependence or interdependence. But if the Honorable Allahabad High Court is giving a harmonious construction, is giving a purposive interpretation, then why they did not give a purposive interpretation or harmonious construction to this point? If we read explanation 1 sub explanation 2, what does it say? It links section 122 penalty with proceedings under section 73 and 74. It says that if 73 and 74 is dropped, is concluded, is deemed to be concluded, then section 122 proceedings would also be deemed to be concluded. Then doesn't they link 73, 74 and 122 together? जब वो खुद ही कह रहे हैं ना कि 73, 74 ड्रॉप होगा तो 122 भी ड्रॉप हो जाएगा, इसका मतलब वो मान रहे हैं कि 122 के लिए 73 and 74 होना जरूरी है, तभी तो 73 और 74 के ड्रॉप होने के बाद 122 ड्रॉप हो रहा है.
सो एक्सप्लेनेशन 1 का अगर हम पर्पसिव और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करें, जो कोर्ट ने भी रिलायंस प्लेस करा फॉर प्रॉपर ऑफिसर, फिर इस केस में क्यों नहीं करा? देन व्हाई डिड दे फॉलो दिस सर्कुलर व्हेन सर्कुलर इज नॉट बाइंडिंग ऑन द ऑनरेबल कोर्ट? So it would be interesting how this would turn up before the Honorable Supreme Court. Next slide, Sarthak ji. So that is exactly which we discussed. Can Section 122 penalty proceedings be continued irrespective of dropping of proceedings under Section 73-74 against the same person? Patanjali के केस में क्या हुआ? If you read explanation 1, sub explanation 2, and I would Sarthak ji, can you please bring to explanation 1, sub explanation 2? आपकी स्लाइड में होगा नहीं. Last. So explanation 1, sub explanation 2 कहता क्या है? Let me read this for you. यहाँ पे कोट नहीं है. Where the notice under the same proceedings is issued to the main person liable to pay tax. Let us underline the word main person here. And we also underline the word and some other person. So पहला notice main person और other person को इकट्ठे दिया है, same proceeding में दिया है. And such proceedings against the main person have been concluded under section 73 and 74 or 74. The proceedings against all the person liable to pay penalty under 122, 125, 129, 30 are deemed to be concluded. So explanation 1, sub explanation 2 ये कहता है कि जब एक ही प्रोसीडिंग में मेन पर्सन को और अदर पर्सन को, मतलब जो एक मेन पर्सन उन्होंने आइडेंटिफाई करा जो पतंजलि था इस केस में, मेन पर्सन एंड अदर पर्सन को अगर नोटिस देते हैं, अदर पर्सन इस केस में कोई था ही नहीं पतंजलि के केस में. So there is only main person Patanjali and other person को अगर नोटिस देते हैं, तो अगर मेन पर्सन की प्रोसीडिंग ड्रॉप होती है तो हम मानेंगे अदर पर्सन की भी कंक्लूड हो गई. ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि इस केस में कोई अदर पर्सन है ही नहीं और एक्सप्लेनेशन 1 सब एक्सप्लेनेशन 2 में वर्ड यूज करा है एंड, मेन पर्सन एंड अदर पर्सन, सो इसलिए एक्सप्लेनेशन 1 सब एक्सप्लेनेशन 2 इस केस में लगेगी ही नहीं. इस केस में पतंजलि वाज द ओनली पर्सन जिसको नोटिस इशू करा एंड ही इज द मेन पर्सन. देयर इज नो अदर पर्सन. सो मेन पर्सन पे proceedings under section 122 can continue irrespective of dropping or conclusion of section 73 and 74 proceedings. वो कहता है वो सिर्फ अदर पर्सन के केस में देखेंगे क्योंकि एंड अदर पर्सन लिखा है एंड कैन नॉट बी रेड एज ऑल. However, the court should have considered that at the end line of that explanation, it says that proceedings against all persons, they have used the word all persons liable to pay penalty under section 122, 125, 129 and 130 shall be dropped. They have not considered that. They have only stressed upon and word used between main and other persons. It is difficult to understand how the notice would define main person and how the notice would define the other person. We have read certain notices which have been issued to us under section 74 and 122, etc. How would you differentiate between the main person and other person? Sometimes the show cause notice that doesn't do so, and there is no legal sanctity of this because legally also there is no differentiation between main person and some other person. Next slide, Sarthak ji. Now we come to section 122, subsection 2 of that, which Sarthak ji during his course of deliberation said and discussed that section 122 subsection 2 has been recently introduced and is verbatim section 73 and 74.
आइडेंटिकली वर्बिटम सेक्शन 73 एंड 74 जो पेनल्टी की बात करते हैं वो 122 सबसेक्शन 2 भी बात करता है। भाई जब ऑलरेडी 73 74 के अंदर ये बात कही गई है कि पेनल्टीज लगेगी, then why a verbatim penalty clause is provided under section 122 subsection 2? And if 73 and 74 penalties are not levied, then whether 122 subsection 2 can be invoked independent of it, which we just discussed that independence is far-fetched because assessment के बाद ही penalty लग सकती है, only in procedural aspects लग सकती है, but 122 subsection 2 सेस होके लगा सकते हैं। मुझे एनालिसिस में सिर्फ एक ही कंडीशन समझ में आई, जो 122 सबसेक्शन 2 किस कंडीशन में पेनल्टी इन्वोक हो सकती है, वो हो सकती है जब सेक्शन 74 सबसेक्शन 8 में मैं फॉल करूं कि अगर मुझे नोटिस आए और मैं वॉलंटरी टैक्स और इंटरेस्ट की पेमेंट कर दूं अपॉन रिसिप्ट ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 74, देन द प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड इन सच केस। 74 में पेनल्टी लग नहीं सकती क्योंकि मैंने नोटिस पे ही टैक्स पे कर दिया विद इन द टाइम फ्रेम विद इंटरेस्ट। देन सिंस द प्रॉपर ऑफिसर कैन नॉट लेवी पेनल्टी अगेंस्ट मी इन दैट सेक्शन 74, कैन ही इन्वोक सेक्शन 122 सबसेक्शन 2 बिकॉज इट इज सिमिलरली वर्डेड। फिर वो मेरी 122 सबसेक्शन 2 का इंडिपेंडेंट नोटिस मुझे दे सकता है। अब उसमें फिर मेरी डेलिब्रेशन सार्थक जी से हुई हमारी कि 75-13 में तो मना करा गया है ना कि दो पेनल्टी साथ में नहीं लग सकती, कि सेक्शन 73-74 की पेनल्टी और 122 की पेनल्टी या और किसी सेक्शन में पेनल्टी साइमल्टेनियसली सेम एक्ट के लिए दो बार पेनल्टी नहीं लग सकती, अवॉइडिंग डबल जेओपार्डी, डबल टैक्सेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। Our take was that the word under section 75 subsection 13 word uses imposed. So if we consider our example in bullet point number 2, if the case falls under 74 and if it is dropped because I paid the tax and interest, then ideally the penalty was never imposed under section 74 and hence 75 subsection 13 will not help me and penalty can be levied under section 122 subsection 2. Next slide, Sarthak ji. So this was a short, concise discussion on Patanjali judgment, our views on the provision of section 73, 74 and section 122 and 125 of the Act. There is also one provision under section 126 of the GST Act. What does section 126 says? If you read section 126, it sometimes seems very, very funny to me. Section 126 subsection 6 क्या कहता है? एक बार सार्थक जी लेकर आएंगे उस पर। Visible है screen? हाँ जी। Section 126 generally general disciplines की बात करता है, and if you read section 126, generally it is on natural justice, principles of natural justice, opportunity देनी है, बुलाना है, notice time से देना है, ये। अब subsection 6 पढ़ लेते हैं इसका. What does it say? It says the provision of this section shall not apply in such cases where the penalty specified under this act is either a fixed sum or expressed as a fixed percentage. Mostly all the penalties under the act are either a fixed sum of 5,000 or 25,000 rupees or are a percentage of tax sought to be evaded or tax evaded, etc. Either it is ad valorem or it is a fixed sum. After inserting subsection 6 under section 126, the whole section goes for a toss. It makes the whole section otious. Why this section or why the subsection is placed, it is very, very difficult to understand. What does it mean that if there is a fixed sum or if there is an ad valorem penalty, then principles of natural justice need not to be followed?
What is this section trying to convey? So, in our take, provisions under GST law, specifically on penalties, are very, very vague, are very unstructured. And the government or the GST Council should consider them rewriting it or restructuring it in a more formal and structural manner to avoid any unintended litigation. This would cost taxpayers a lot, because we can see a lot of litigation happening on these procedural aspects, which can be avoided by structuring a well formalized, clear, unvague provision. That's all from my side. Thank you so much, everyone, for being a patient listener. Questions we can have, queries of the participants. So यहाँ पे I would like to mention one thing. In fact, since Pranshu ji has concluded his presentation, and obviously there is more clarity to all the listeners that हम अपना मैसेज क्या कन्वे करना चाहते थे from today's topic. एक सिर्फ प्रोविजन पढ़वाने का हमारा एक उद्देश्य नहीं था. We wanted to make some points, क्योंकि देखिए पतंजलि की जजमेंट जो है it came few months back. 2 months हो गए उसको. It is still a very new judgment. Plus there are a lot of old notices, 122 के नोटिस आ रहे हैं, क्योंकि देखिए फेक इनवॉइसिंग की जो केसेस हैं मोस्टली फाइनेंशियल ईयर 18-19 से स्टार्ट हुए थे. इन्वेस्टिगेशन डीजीजीआई एंटी इवेजन ने स्टार्ट किया, एंड 30th June वाज द लास्ट डे टू इशू शो कॉज नोटिसेस अंडर सेक्शन 74. सो अभी रिसेंटली बहुत नोटिसेस आए हैं शो कॉज नोटिसेस जो सेक्शन 122 में है, 74 में है. सो वी जस्ट वांट के आप प्रोफेशनल्स एंड एक आर्ग्यूमेंट से सारी चीजें लिखें, सबमिशंस में डालें that 122 is not independent, 74 रिक्वायर्ड है उसके लिए, क्योंकि 122 के भी इंडिपेंडेंट नोटिस काफी आए हैं टू सप्लायर्स बेसिकली अंडर सर्कुलर 171. जैसे प्रांशु जी ने कहा था कि सर्कुलर 171 में नोटिस दिया जा सकता है 122 में. वो उन केसेस में दिया जा सकता है जहां पे सप्लायर जो है उसने टैक्स तो जमा करवा दिया है बट उसने फेक इनवॉइसिंग कर रखी है. तो वहां पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके ऊपर पेनल्टी लेवी कर रही है अंडर सेक्शन 122(2). सो ये सब चीजें जो है इस पे क्या है, अभी एक हाई कोर्ट की जजमेंट आई है. देयर आर लॉट ऑफ हाई कोर्ट्स दैट विल फॉलो एंड डाइवर्जेंट व्यूज भी होंगे. सो वी शुड बी वेरी केयरफुल इन टेकिंग इन ड्राफ्टिंग अवर सबमिशंस, कि एटलीस्ट हम ये व्यू लेके चलें तो हो सकता है एटलीस्ट कल को अपील्स पे और ट्राइब्यूनल पे हमें हमारे क्लाइंट को बेनिफिट मिल जाए. सो दिस वाज द होल पर्पस एंड आइडिया ऑफ इम्पार्टिंग द नॉलेज टू एवरीवन. जी विकास जी, चावला जी. जी सर. सर हमारे एक यूजर का क्वेश्चन था कि ब्रीफली डिफरेंशिएट कर दीजिएगा 74 और 74A को. अच्छा. देखिए 73 और 74 पहले मैं एक डिफरेंस बताता हूँ, फिर मैं 74A का डिफरेंस बताऊंगा. सो 73 तो नॉन फ्रॉड केसेस के शो कॉज होते हैं जहां पे आपकी यूजुअली 10% पेनल्टी लगती है. 74 फ्रॉड केसेस में लगता है जहां पर जो पेनल्टी है वो 100% हो जाती है. प्लस टाइमलाइन जो है शो कॉज इशू करने का वो बढ़ जाता है. जैसे 3 साल 73 में, वहां पे 74 में 5 साल हो गया है. तो अब ये दोनों प्रोविजंस को एक यूनिफाइड प्रोविजन में डाल दिए गए, कॉमन प्रोविजन में. वो है 74A. सो 74A जो है वो मिक्स है 73 और 74 का, जिसमें कॉमन टाइमलाइन है. ठीक है ना. सो 73-74 की जो नोटिस हैं वो आएंगे 23-24 तक के फाइनेंशियल ईयर के लिए. सो 23 और 24 की जो हमारी असेसमेंट होगी या डिटर्मिनेशन होगी वो होगी 73-74 में. उसके बाद से आपका 74A में नोटिस आना शुरू हो जाएगा फॉर 24-25. सो 74 में क्या है, कंबाइंड प्रोविजंस डाल दिए गए हैं फ्रॉड और नॉन फ्रॉड केसेस के. इनफैक्ट सो अगर वहां पे फ्रॉड, क्योंकि दोनों में देखिए फर्क क्या था, सिर्फ पेनल्टी और टाइमलाइन का फर्क था. तो दोनों की टाइमलाइन कॉमन कर दी गई है और पेनल्टी लेकिन वही रखी गई है जो 74 और 73 में इंडिविजुअली लगती थी. 10%, जैसे मैंने बताया था 10% लगेगी 73 में, 74 में 15, 25, 50 या 100 लगेगी इनफैक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द टाइमलाइन. So this is the major difference जो 73, 74 वर्सेस 74A का है. 74A बेसिकली कंबाइंड और एक यूनिफाइड सेक्शन है जो 24-25 से एप्लीकेबल है. जी सर.
सर एक यूजर का क्वेश्चन और है कि क्या सर मतलब 122 सेक्शन 122 के अंदर में क्या कुछ मास्टरमाइंड वाली कुछ बात लिखी हुई है क्या, जो रियल बेनिफिशियरी होते हैं? हाँ, तो सर उसके लिए थोड़ा जैसा हमारे सीए के लिए थोड़ा सा बताइए एक बार कि मतलब क्या सावधानी बरतनी चाहिए उसमें। नहीं बिल्कुल है, मैंने एक सेक्शन रीड आउट करा था बीच में। जी सेक्शन 122 1A था जो 1 जनवरी 2021 से आया था, वो इन्हीं केसेस को कवर करता है जो बेसिकली बेनिफिशियरीज हैं, जिनको बेनिफिट अराइज होता है फ्रॉम दीज ट्रांजैक्शंस। सो इसी वजह से जो 122 1A है, वो एनी पर्सन के ऊपर बात लाया गया था, ना कि एनी टैक्सेबल पर्सन। सो मान यस लेते हैं कोई कोई मास्टरमाइंड है, उसने बहुत सारी फेक फर्म्स बनाई हैं यूजिंग पैन एंड आधार ऑफ डिफरेंट पीपल, जिसके नाम पे उन्होंने ट्रेडिंग करी, और वो बेनिफिशियरी को कैप्चर करने के लिए 1A लाया गया था 1 जनवरी 2021 से, कि उसके ऊपर भी जितना टैक्स इवेडेड होगा उतनी पेनल्टी लगाई जा सकती है, इवन दे कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द फेक इनवॉइसिंग केसेस। सो 122 1A इज इंपॉर्टेंट फॉर देम। जी सर। हाँ जी। तो सर एक क्वेश्चन मेरा है कि जैसे हमारे पास एसआईबी के केसेस आ रहे हैं और उनका बेसिस रख रही है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का, उसका उनका रेट्रोस्पेक्टिव बेसिक क्या, इफेक्ट। विकास जी आपकी आवाज थोड़ी कम आई। बेसिस उसका सर रख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हो रखे हैं सप्लायर के वो विद रेट्रोस्पेक्टिव डेट से हो रखे हैं। तो वो केस बनता है 74 में बना देता है डिपार्टमेंट, उसमें 100% की पेनल्टी लगा देते हैं वो लोग। लेकिन इसमें जो हमारे रियल डीलर है जिनको इस चीज का नहीं पता था कि इस रेस्पेक्टिवली सप्लायर ने उसका टैक्स का पेमेंट किया है कि नहीं किया है गवर्नमेंट को, सेक्शन 16(2)(c) के अंदर जो बात लिखी गई है, तो हम उसको चैलेंज कर सकते हैं कि ये सेक्शन जो ये केस बनेगा हमारे पास वो 74 का ना होकर के 73 में आए, ताकि हम अपनी पेनल्टी को कम करा सकें। देखिए पॉइंट काफी अच्छा है, मैं आपको जो आपने रेज किया है, देखिए 74 लगता कब है? 74 लगता है जब सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स हो। सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स दिए डिफाइन करे गए 74 के अंदर ही। जी सर। 74 अगर सेक्शन आप पढ़ेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन में सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स डिफाइंड है। सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज जो आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए थी बट आपने अपने रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं करी, ठीक है ना। सो अब ये मेरा ये व्यू रहा है कि देखिए मैंने उसकी, जो ऐसा डीलर था, मैंने उसकी परचेजेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाली हैं, मेरी बैलेंस शीट का यस पार्ट सर। बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल। फर्स्टली। सो मेरी कोई इंटेंशन है ही नहीं इवेट करने की टैक्सेस, और ऑब्वियसली जी बात है जी। कि सेपरेशन तो हुआ नहीं इन दैट केस। मेरे को यस सर। रिटर्न में क्या शो करना था? मेरे को सिर्फ आईटीसी क्लेम तो करना था, वहां पर मुझे जी कोई जी जी। डिस्क्लोज नहीं करना रिटर्न के अंदर R1 या 3B में कि मैंने किस सप्लायर से गुड्स खरीदे हैं। R1 में तो मेरी सेल जाती है, मेरी परचेज तो जाती ही नहीं है। 3B में बिल्कुल। मेरी आईटीसी जाता है सिर्फ टोटल कंसोलिडेटेड अमाउंट फॉर अ पर्टिकुलर टैक्स पीरियड मंथ। सो मैंने कोई भी सेपरेशन तो करा नहीं। सो ये प्ली लेके अगर आपने अपनी परचेजेस अकाउंट में ऑडिट बैलेंस शीट में अगर ये चीज ले रखी है, इसमें जजमेंट भी एक्साइज रजीम की जो कहती है यस कि सर। अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट बन रहा है, सो इन दैट केस जी जी। सेपरेशन नहीं लगेगा। सो डेफिनेटली आपको इसके अंदर रिलीफ मिलेगा और 74 टू 73 कन्वर्ट हो जाएगा आपका। हाँ, जी मतलब सर। होने जी के सर। चांसेस बिल्कुल ब्राइट है, क्योंकि आपने कोई सेपरेशन करा ही नहीं है इस केस के अंदर। यस सर। तो सर मेरा एक एक्चुअली एक क्लाइंट का केस है, तो मैं उसमें मतलब सुभाष सिंह का एक यूके हाई कोर्ट का एक वो जजमेंट आया हुआ है जो इसी बात को चैलेंज करता है कि पेनल्टी 100% ना लगा करके आप 10% पे लेके आइएगा उसको, क्योंकि हमारा जो डीलर है वो 74 में कवर नहीं होता है। हम्म। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। बिल्कुल ठीक देखिए कह रहे इसमें सबसे बड़ी बात यही है ना कि अब अल्टीमेटली 73 की टाइमलाइन चलेगी, 18 19 17 18 की। अब जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज हैं, एसएआईबी हो गई, एंटी इवेजन हो गया, डीजीजीआई हो गए, इनके मोस्टली केसेस फ्रॉड के केसेस बनते हैं 74 के अंदर। प्लस क्या है, इनको एक एक्सटेंडेड टाइमलाइन मिल जाती है इनफैक्ट, टू टू इशू शो कॉज नोटिसेस। सो ऐसा हैं। भी यस सर। देखा गया है कि कैंसिल डीलर्स के नोटिस 73 में भी आ रहा है, 74 में आया है। तो 74 इसमें पे कोई भी है। हाँ जी। यूनिफॉर्मिटी नहीं है। दी ओनली थिंग इज कि हम अपने एविडेंस प्रोड्यूस करें, लीगली उसको फाइट करें कि सप्रेशन नहीं है। डेफिनेटली एबलेट फोरम में आपको इसका रिलीफ मिलेगा, आई मीन देयर इज नो डाउट ऑन दैट। पहले भी आया है एक्साइज रजीम में, अभी भी ट्राइब्यूनल बनेगा तो आपको ये वाले रिलीफ मिलेंगे, मतलब ये मेरा व्यू है इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है सर। बिल्कुल ठीक एक है। थैंक प्रभाष यू झा सर। जी कुछ कहना चाहते हैं, उन्होंने हाथ खड़ा किया है। प्रभाष जी प्लीज।
सर वो म्यूट कर किया हुआ उन्होंने, एक्चुअली मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा है उनका। आई थिंक उन्होंने कुछ लिखा है, ओनली जीएसटी पिन कोड वाज रॉन्ग व्हाइल द जीएसटी ऑफिसर कॉन्फिस्केटेड द व्हीकल एंड चार्ज्ड 200% डिपॉजिट बाय क्लाइंट। सो मुझे लगता है उनकी ईवे बिल के रिलेशन में कोई है कि सिर्फ ईवे यस बिल यस यस। गलत लिख दिया। तो देखिए इसमें ना सर्कुलर आया हुआ है, जीएसटी सीबीआईसी ने एक सर्कुलर रेज किया हुआ है कि माइनर मिसमैचेस के लिए, माइनर कुछ फॉल्ट्स के लिए, ये प्रोसीजरल लैप्स है बेसिकली, एक माइनर फॉल्ट है, तो इसके लिए 1,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है इनफैक्ट। तो अगर पेनल्टी लगा के ऑर्डर पास कर दिया है तो अब अपील फाइल करें इसके अंदर, और उस सर्कुलर का रेफरेंस डालें अपने रिप्लाई के अंदर। क्योंकि पिन कोड जो है, जीएसटी नंबर जब सब कुछ डाल दिया, टैक्स पे कर दिया, इनवॉइस है, सब कुछ सही है, सिर्फ पिन कोड गलत डालने से आप 200% पेनल्टी नहीं लगा सकते। इनफैक्ट इसमें नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं, इलाहाबाद हाई। उसमें सेक्शन 126 भी रेफर कर सकते हैं कि फॉर small issues or small writing mistakes, penalty cannot be levied. 126 also specifically provides for that. Clerical errors के लिए नहीं लग सकते। तो अपील में जाने के लिए सर इसके अंदर भी 4 मंथ का टाइम होता है हमारे पास, 3+1। 3+1 का। तो अगर वो टाइम निकल गया है तो दूसरा हमारे पास क्या रेमेडीज है इसके अंदर? टाइम निकला क्यों है, मतलब वाई देयर इज अ डिले? सर मतलब निकल गया है कि निकल नहीं हमारे पास देखिए, क्लेम डिले आया है, सपोज दैट कि उसको पता ही नहीं था कि रिफंड ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो अब 5 महीने हो गए, तो क्या उस केस में भी हम रेक्टिफिकेशन में जा सकते हैं क्या? देखिए मैं आपको बताता हूँ, रेक्टिफिकेशन तो आईटीसी के केस में जा सकते हैं, बट इसके अंदर अगर आपके पास रीजनेबल कॉज है तो जी हाई कोर्ट आपकी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन को एंटरटेन कर देगा। द कमिश्नर अपील्स नहीं करेंगे इनफैक्ट, बिकॉज उनके पास सिर्फ 1 महीने की पावर दी गई है टू कंडोन द अपील। जी अगर जी एक सर। महीने के बियॉन्ड है, मतलब 3+1 4 महीने के बाद आप अपील फाइल कर रहे हैं, तो दे विल नॉट एंटरटेन, जो हो रहा है लॉ में लिखा भी नहीं है इनफैक्ट। सो बेटर इज टू अप्रोच द हाई कोर्ट, वहां से एक डायरेक्शन ले ली जाए कि अपील फाइल हमारी जो डिले है उसको कंडोन किया जाए, एक रीजनेबल कॉज से था। हाई कोर्ट्स ने करा है, काफी जजमेंट्स आई है जीएसटी के अंदर जहाँ पे हाई कोर्ट ने कंडोन किया है डिले को, यू नो। जी सो सर। रीजनेबल कॉज होगा तो डेफिनेटली हाई कोर्ट कंडोन करेगा। रेक्टिफिकेशन मुझे नहीं लगता इस केस में आप कर पाओगे। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, लीगली इट इज नॉट अलाउड। यस सर। हाँ जी। आई थिंक और क्वेरी तो नहीं है शायद से, विकास जी। सर नहीं, नहीं नहीं सर, कोई क्वेरी नहीं है। मैं वही देख रहा हूँ कि जो थे वो रिमूव भी कर चुके हैं। चावला जी कंक्लूड करें या शुड बी वेट? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, कंक्लूड कोई मुश्किल नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। So thank you very much, our guest speaker, for sparing your valuable time and sharing your valuable input with our members. And thank you, moderator, also for giving your precious time for this. So thank you all the members for attending this program. So thank you all the members. Thank you very much. थैंक थैंक यू यू। वेरी मच सर, थैंक यू थैंक यू। Thank you.